और इस वक्त सीधे रुक करेंगे चंडीगढ़ का, जहां पर G20 की एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया जा रहा है। As this press conference and this meeting is primarily about the G20 meeting, so my request to all my media friends would be, please restrict yourself only to the questions relating to G20 and nothing else, because that is not really our mandate. We are here to discuss what is going to happen in the next 2 days. शुरुआत में मैं रिक्वेस्ट करूंगा मेरी कोलीग अनु मथाइस, इकोनॉमिक एडवाइज़र, और हमारे साथ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के जॉइंट सेक्रेटरी साहब हैं। आप दोनों लोग मिलके इनपुट्स देंगे रिगार्डिंग दिस 2 days प्रेस ब्रीफिंग, दिस 2 days मीटिंग। वंस यू हैव गॉट द इनपुट्स, द इनिशियल इनपुट्स, then the floor will be open for the question answer segment. When we will be starting the question answer segment, my request will be that whoever wants to put up a question, please raise your hands, introduce your organization, and ideally we should have one question from the print and one from the electronic, so that each one of you gets covered in a balanced way. So now I'll open the floor and I'll request my colleague Anu Mathais, Economic Advisor, Ministry of Finance, to give you the basic inputs. Good afternoon or namaskar aap sabko. Today we are here today over the next few days we will have a meeting of a working group of the G20, the International Financial Architecture Working Group. So ये जो G20 है इसमें है 19 देश प्लस यूरोपियन यूनियन, जो इनके मेंबर्स करीब 85% of global GDP, over 75% of global trade और 2/3 of the world population comprise हैं इस G20 grouping में. और this grouping plays an important role in shaping and strengthening global financial architecture and governance on major international economic issues. So this group originated in response to a crisis, the Asian financial crisis. At that time when it was formed, it was a grouping of the finance ministers and central bank governors of these countries that comprise the G20. Then in 2008, when there was a global financial crisis, then it was elevated to summit level. So that means that the heads of state of these countries also began to meet every year. So the G20 presidency is now with India. So we took over from Indonesia last year, and from 1st December we assumed the presidency. You would have seen the president of Indonesia handing over the presidency of the G20 to Honorable Prime Minister Modi ji at the Bali summit last year. So from 1st December, India has the presidency of the G20 till 30th November. Now we represent the Ministry of Finance handles something called the finance track of the G20, and because there are many working groups in the G20 divided into 2 parts. One part is called Sherpa track, and the word Sherpa comes from the Nepali word Sherpa, who assists mountaineers in mountain climbing. So it's come just from that, because the Sherpa assists the leader of the country. So that track is handled by the Ministry of External Affairs and a number of ministries like agriculture, health, electronics, and so on. Now the Ministry of Finance handles the finance track of this of the G20, and in the finance track we have 8 working groups and 8 Ministry of External Affairs and a number of ministries like agriculture, health, electronics, and so on. Now, for Ministry of Finance handles the finance track of this of the G20, and in the finance track we have 8 working groups and 8 work streams and 5 working groups. So in Chandigarh, on 30th and 31st, we have the first meeting of the International Financial Architecture Working Group. And as its name suggests, this International Financial Architecture Working Group, it deals with the global financial architecture, and it particularly deals with how to strengthen the crisis response
in times of crisis, जैसे जब पैंडेमिक हुआ था तो सबसे गरीब देशों को किस तरह से और ज़्यादा सपोर्ट दिया जाए. And so it is basically a crisis response, how to strengthen global financial architecture to respond to crisis. So each working group will have about 4 to 5 meetings throughout the year. So the meeting of this group also will take place in different parts of India, and about 100 delegates from the G20 countries will come. There will also be representatives from invitee countries. So the presidency has can invite some more countries in addition to the member countries. So they will also be represented, and international organizations. And this meeting will be inaugurated by Honorable Minister of Agriculture and Farmers Welfare, Shri Narendra Tomarji, and Honorable Minister of Food Processing Industries, Shri Pashupati Kumar Paras. And the meetings will be steered, will be conducted. This group has 2 co-chairs, country co-chairs, France and South Korea, who will co-chair the meeting. And along with that will be representatives of the Indian presidency from the Ministry of Finance and the Reserve Bank of India. And what this meeting will discuss over 2 days will be how to increase the stability and cohesion of international financial architecture, and how it can be made better fit to serve the new challenges of the 21st century, जैसे climate change, pandemics. So how to strengthen the international financial architecture to deal with this. And along with every working group meeting, we are also organizing side events, so that there is a little more occasion to discuss certain issues in detail. So for this meeting, there will be a side event on CBDCs, that is central bank digital currencies, opportunities and challenges. This event has been organized by Reserve Bank of India. And the idea is to share experiences on different countries, because there have been some countries have introduced these CBDCs on a pilot basis. We have done it. So there will be a seminar, there will be a side event on that. Also, the aim of the Indian presidency is to connect with the local people. The local people should also understand what this G20 is all about, which my colleague will also speak about. And after this meeting in Chandigarh, we will have this group, the same group, International Financial Architecture Working Group, will meet again in March, June and September in other places to take forward the discussion. So ultimately, whatever is discussed will go into certain outcome documents and reports and so on that will be brought out. And finally, all this will feed into something called the Leaders' Declaration, which is issued at the level of the summit. So with this is the brief background of the International Financial Architecture Group. Thank you. नमस्कार साथियों, जो G20 के बारे में बताने के पहले शायद आपको पता होगा, मैं चंडीगढ़ म्यूनिसिपल कमिश्नर था 2015 to 17 और मैं तलाश कर रहा था कि मेरे पुराने साथियों में कोई तो दिखे, किसी का चेहरा तो दिखेगा। कुछ दिख रहे हैं, तो मुझे बाद में यही पता चला कि शायद मीडिया में भी ट्रांजिशन की स्पीड वही है जो अफसरों में है। खैर, बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलके आज दोबारा 5-6 साल बाद, और अगले 2-3 दिनों में हम यहीं हैं और G20 के दौरान उम्मीद है हमारे इंटरेक्शंस होंगे। G20 जैसा कि मेरे कलीग ने बताया, उसके बारे में बताया, उसके अंदर अलग अलग वर्क स्ट्रीम और जो वर्किंग ग्रुप्स हैं उसके बारे में बताया, उसके काम और उसके उद्देश्य क्या है उसके बारे में बताया। लेकिन G20 जैसे किसी भी बड़े इवेंट का एजेंडा सिर्फ मीटिंग नहीं होता। ऐसे किसी भी बड़े इवेंट का एजेंडा सिर्फ दुनिया के नुमाइंदों को एक जगह बुलाकर बिठाना नहीं होता, बल्कि उस देश के इतिहास की, विरासत की, खान पान की,
सांस्कृतिक उपलब्धियों की, समाज की, इन तमाम का भी एक परिचय देना भी लक्ष्य होता है, ताकि जब वो यहाँ से जाएं तो इस देश के बारे में उनकी जानकारी बढ़े और इस देश का जो गौरवशाली इतिहास है या जो गौरवशाली परंपरा है उसके बारे में वो जान कर जाएं। तो G20 की मीटिंग्स जैसा आपको पता है पूरे साल भर चलेगी और देश के अलग अलग हिस्सों में शेड्यूल हुई है, ताकि पूरे हिंदुस्तान की, इतना बड़ा मुल्क है और इतनी इसकी विविधता है, उसकी एक जानकारी सारे जो भी लोग आते हैं इसमें पार्टिसिपेट करने अलग अलग मुल्कों से, उनको मिल सके। और जब फाइनेंशियल आर्किटेक्चर पे मीटिंग वेन्यू तय करने की बात आई तो एक ही वेन्यू इसके लिए था कि फाइनेंशियल आर्किटेक्चर के लिए वेन्यू वो होना चाहिए जो आर्किटेक्चरल मार्वल हो, और द सिटी ब्यूटीफुल को छोड़कर हिंदुस्तान में ऐसा कोई वेन्यू नहीं था जो आर्किटेक्चर के लिहाज से पूरी दुनिया में अपना एक स्थान रखता है। तो ये जो एक तमगा है इस सिटी ब्यूटीफुल का, इसको हम कोशिश करेंगे कि अगले 2-3 दिनों में उनसे जो डेलीगेट्स हमारे आ रहे हैं उनका इससे परिचय कराया जाए। इसका इतिहास क्या है, इसके आसपास का जो एक हमारा उत्तर भारतीय परिवेश है उसका खान पान क्या है, उसके खान पान की विविधता क्या है, वो हम कोशिश कर रहे हैं उनको अपने, जो हमने उनके लिए खास खान पान की व्यवस्था की है उसके द्वारा बतलाने की। जो यहाँ के आर्ट और कल्चरल फॉर्म हैं उसको बतलाने का प्रयास किया जा रहा है सांस्कृतिक कार्यक्रमों द्वारा। एक छोटा सा सांस्कृतिक कार्यक्रम आज भी रखा गया है, एक बड़ा सांस्कृतिक कार्यक्रम कल रखा गया है सुखना पर, तो इसके द्वारा हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। फिर इसके बाद एक पोलो मैच जो आज चंडीगढ़ पोलो क्लब के द्वारा कराया जा रहा है उसमें उनकी शिरकत करवाई जा रही है, ताकि वो इस गेम को, जो हिंदुस्तान की ईजाद है, इस गेम को देख सकें, समझ सकें और इसका आनंद उठा सकें। कल सुखना लेक पर एक गाला इवेंट का ऑर्गेनाइज किया जा रहा है जहां पर उनको हम चंडीगढ़ की खूबसूरती का नज़ारा करा सकें, और चंडीगढ़ की खूबसूरती का नज़ारा जो सुखना से मिलता है, मेरे ख्याल से आप सब उससे वाकिफ हैं। इसके अलावा अगर चंडीगढ़ हम ला रहे हैं दुनिया के तमाम लोगों को, तो कोई भी विजिट रॉक गार्डन के बगैर अधूरी है। तो हम रॉक गार्डन भी इनको ले जा रहे हैं ताकि वो देख सकें। आज पूरी दुनिया में एक मूवमेंट सा चला है, रिसाइकल, पूरी दुनिया में मूवमेंट है ग्रीन, पूरी दुनिया में मूवमेंट है कैसे हम रिसोर्सेज के कम इस्तेमाल से ज़्यादा काम कर सकते हैं। और चंडीगढ़ का जो ये रॉक गार्डन इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, और वो तब से एग्जाम्पल है जब से ये बातें इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी में, डेवलपमेंट की टर्मिनोलॉजी में नहीं आई थी। तो वो दिखाने का प्रयास है। और अंत इसका हम 1 तारीख को करेंगे, जो इस रीजन का विरासत है, जो हमारा गौरवशाली इतिहास है, जो हमारे त्याग की, बलिदान की याद दिलाता है, विरासत खालसा। हम विरासत खालसा इन सबको ले जाकर उसके दर्शन करवाएंगे। तो हमारी कोशिश होगी कि अगले 2 से 3 दिनों में हिंदुस्तान, खासकर उत्तर भारत जिसको हम कहते हैं, उसकी जो गौरवशाली परंपरा है उससे इनका परिचय करवाया जाए। धन्यवाद। Thanks, dear colleagues. I think you have got a very substantial kind of insight into what is going to happen over the next 2 days. इसमें आपको फाइनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या मीटिंग्स होंगी वो भी आपको एक ब्रीफ मिला, और इस मीटिंग के बाद आपको एक प्रेस नोट भी मिल जाएगा जिसमें विच कंटेन्स ऑल द बेसिक डिटेल्स। नाउ आई थ्रो द फ्लोर ओपन फॉर क्वेश्चन आंसर्स फ्रॉम योर साइड। प्लीज फील फ्री टू आस्क द क्वेश्चंस। ओके, लेट अस स्टार्ट फ्रॉम दिस साइड। पहले अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दीजिए। I am Sajan Sharma from Aadh Prakash newspaper in Chennai. My question is, as you have briefed the objective of G20 is, which is the wide objective apart from this financial thing? Second question is, what kind of work these nations have recently done on which issues? And apart from G20 members, which other organizations are taking part in it? These are 3 questions. So, as I said, the G20 has many work streams and working tracks. I think your question was what other things the G20 does apart from this international financial architecture. Okay. So, under the finance track, there are 8 work streams.
So there is one which is called the Framework Working Group. This looks at the framework for growth and issues around macroeconomic issues and how to bring about strong, sustainable, balanced, inclusive growth. So this group, incidentally, this Framework Working Group is co-chaired by India and the UK. So in the finance track, all the groups have country co-chairs. So the first one, Framework Working Group, is co-chaired by India and UK. So from India, the co-chair is our chief economic advisor. Then this International Financial Architecture Working Group, which looks at the global financial architecture, debt relief, and so on, that it is co-chaired by France and South Korea. Then we have an infrastructure working group. It looks at issues related to financing of infrastructure, and incidentally my colleague Baldev is handling that working group, and that is co-chaired by Australia and Brazil. Then we have another group. This is called Global Partnership for Financial Inclusion. And that is co-chaired by Italy and Russia. This is a group in which we have a lot of interest because financial inclusion is something in which India has made great leaps and bounds and has made a lot of progress. So this is also another group under the finance track. Then we have a joint group of health and finance. So this is a combination of health work and finance work, and it came up in the time of the pandemic to see, basically the idea was how do we increase the coordination between finance and health so that when money is needed to quickly respond to pandemics or to prevent pandemics, then how does the world mobilize enough money? So there is that global partnership. Then there are certain areas, financial sector issues are handled in the G20 finance track, and we have tax issues also handled in the finance track. So these are the other work streams apart from what this working group in Chandigarh is doing. Then you asked about which are the other organizations apart from G20. So as I said, in the G20, also these international organizations are also invited. So the main ones among them like IMF, World Bank, OECD, then all the other multilateral development banks, then Financial Stability Board, all of them participate very actively in the G20 because the G20 does not have its own secretariat. So the presidency rotates among member countries, and the country which has the presidency does all the organizational part. The research work, the inputs all come from these international organizations who also are invited to these meetings. Is there any proposed agenda to have a headquarter of this G20 in India? No, they actually at one time, once or twice in the history of the G20, they've talked about having a permanent secretariat in one place. But then it was decided that the whole तो चंडीगढ़ से आप सीधा सवाल देख रहे थे। इस बार G20 की प्रेस वार्ता का वहां आयोजन किया जा रहा था कि चंडीगढ़ में G20 की पहली अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना कार्य समिति समूह की बैठक होने जा रही है। 30 और 31 जनवरी को ये बैठक होगी। केंद्रीय कृषि मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण मंत्री इसका उद्घाटन करेंगे। भारत के तमाम शहरों में से चंडीगढ़ को चुना गया है इन बैठकों की मेज़बानी के लिए। इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर वर्किंग ग्रुप की ये बैठक होगी और इसमें जैसे कि हम जानते हैं कि वित्त और खाद्य सुरक्षा जो विषय है वो G20 के मुख्य विषय हैं और G20 की शुरुआत से ही चर्चा में प्रमुखता रहे हैं। इन्हीं तमाम मुद्दों पर और इनसे जुड़े तमाम चीज़ों पर चर्चा होगी और इसके लिए चंडीगढ़ बिल्कुल पूरी तरह से तैयार है स्वागत करने के लिए तमाम प्रतिभागियों का। G20 देशों के से जुड़े जो प्रतिभागी है जो वहाँ पहुँच रहे हैं।